A very good morning, everyone. Om Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Offering my prayers to Goddess Saraswati, I, Dr. Ruchi Mishra Tiwari, welcome you all to UNMESH International Literature Festival organized by Ministry of Culture, Government of India along with Sahitya Academy. Today is the culmination day and the first session in Jaijayavanti Auditorium of Ravindra Bhavan. The topic is Value of Literature. But before we start, I request Secretary Sahitya Academy, Dr. Krish Srinivas Rao, to welcome the participants. Firstly, the presiding person of this session, Mr. Vishwas Patel ji. Sir. A round of applause. Madam Anandita Bandhopadhyay. A very warm welcome, ma'am. A.P. Maheshwari ji. Satish Alekar ji. A very warm welcome, sir. Shiv Narayan Singh ji. Sundeep Bhatoria ji. A very warm welcome to all our participants. I request all of you to keep your mobile on mute mode, on the silent mode. The time allotted to each participant to speak is 8 to maximum 10 minutes, not more than that. I request the chairperson, sir, Mr. Vishwas Patel, to please start the session with his words of wisdom. Sir, please. Friends, I welcome all of you in this valuable session, Value of Literature. In a far-flung area of Sahyadri mountain range, there was a small village where there was arrangement of Sriram Saptah. Many sages and scholars were telling and retelling stories of Ramayana and enchanting mantras and were singing verses for 7 long days. In its farewell session meeting, the Mukhia of the village murmured, "Sirs, we villagers..." In farewell meeting, the Mukhia of village murmured, "Sirs, we villagers are puzzled with one question only, who was Sita Maiya to Rama?" सीता माता का प्रभु रामचंद्र से नाता क्या था? On the same line, here for last 3 days, after burning a lot of oil, spending the big fund of Culture Department and Sahitya Academy, on the last day we are questioning and assessing that what is the real value of literature. The title is abstract, the idea is abstract, but it is a challenging one also. And here we have very good speakers for this session. A.P. Maheshwari ji, an IPS officer and literature, Professor Bandhopadhyay ji, Vijayananda Singh, then Satish Alekar, the great playwright, then Sunil Trivedi ji, Sandeep Bhutaria. Friend, I think everybody should observe the time limitation of 10 minutes. I do get scared only on 2 occasions.
when a leader takes a mic, and when a professor who is always bound by 45 minutes, if he appears on the other stage, even there he doesn't forget his space of 45 minutes. But I think you all will complete your your valuable views on this valuable subject within time of 10 minutes only. Thank you, sir. As sir has already mentioned, we have to keep the time limit in mind. And also, I request everyone to please keep your mobile on silent mode. First, we would like to start with Madam Anandita Bandyopadhyay. Madam Anandita Bandyopadhyay is a professor of Bengali, Department of Bengali, University of Bardhaman, West Bengal. She is also the Vice President of Bangla Sahitya Parishad, Kolkata. She has 5 publications to her credit. Her 44 essays have been published in various journals, including 5 in international journals and books. She has received Purnima Guha Memorial Prize, Sadhna Bhattacharya Memorial Prize from Kolkata Little Magazine Library and Research Center for Best PhD work in Bengali. Her specialization is 19th century Bengali woman. So very warm welcome to Anandita, madam. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Respected Chairman, respected Secretary of Sahitya Academy, and all the dignitaries and my colleagues here. My heartfelt thanks to Sahitya Academy. I am proud to be here today. Thanks for organizing Asia's largest literary festival. Here are representatives of 103 languages. They have come at the Sahitya Academy with their own literature, own languages, own art forms. We are sitting now in Rabindra Bhavan. Rabindranath said, he repeated, Sahitya means Shahitatta, which make a bridge between mind and joy. Literature gives pleasures to us, gives eternal joy, Milan and Ananda. From ancient age, human expresses his emotions, his thoughts, his gratitude to earth, to nature, to everyday's life, through literature, through art. To say that literature grows directly out of life is, of course, to say that it is in life itself that we have to seek the sources of literature, or, in other words, the impulses which have given birth to the various forms of literary expression. The great impulses behind literature be like these: our desire for self-expression, our interest in people and their doings. 3, our interest in the world of reality in which we live, and in the world of imagination, which we conjure into the existence, and 4, our love of form as form. We are strongly impelled to confide to others what we think and feel. Hence the literature, which directly expresses the thoughts and feelings of the writer. We are intensely interested in men and women, their lives, motives, with the great drama of human life and action. We are fond of telling others about the things we have seen or imagined. Hence the literature of description. And where the aesthetic impulse is present at all, we take a special satisfaction in the mere shaping of expression into forms of beauty. Hence, the very existence of literature as art. The experiences of man as man, those great common questions of life and death, sin and destiny, God, man's relation with God, the hope of the race here and hereafter,
and the like, which transcend the limits of the personal lot and belong to the race as a whole. The relations of the individual with his fellows. In India, there are many languages. We can say, here is the seed of Sahitya in our Rig Ved at first, very much near to every people's heart. Modhu bhataritayate, modhu ksharanti shindhava, madhina shantashi shantashadhi, madhu naktam uto shasha. Madhu, বাতাসে মধু, নদীতে মধু, বৃক্ষগুলি মধুতে ভরে উঠুক. Madhu as Sahid, I don't know, in Hindi mein, honey. Yeah. Honey in the air, honey in water, and brikshas, the trees. Modhumanna banaspati, modhumanasta surjo. There is bee, honey, and there is bee, blissful with Briksha, Banaspati, and the sun. And side by side, there was obviously folk tales, storytelling, story of everyday life, which human told years after years. In Sanskrita, we have the great epics like Ramayana of Adi Kavi Valmiki and Mahabharata by Rishi Vedavyas. But it was written year after years. In Mahabharata, it is not only epics. These are not only epics, but here depicted the entire history of Bharatvarsha. There is so much kahinis and materials. Till today, writers take their Vishaya from these epics. They reconstruct in Bengali. Michael Madhusudhan Datta made Ravana as his hero, Meghnad as his hero, Meghnad Badkabya, in Meghnad Badkabya, the literary epic in Bengali. Before Ramayana and Mahabharata, there was Rig Veda, which I told, and Rig Veda was by rishis, written by rishis, and there was not Shruti, they all tales in their mouth. 10 mandala and 1028 shuktas are there. Here they wrote about God, the mother nature, about Srishti. They prayed Panchabhuta, Shiti, Up, Tej, Marut, and Bom. In ancient Tamil, there was written 2 epics. Shilappadikaram, written by Ilango Atigal. Muni Mekhoili, he was a Buddhist, written by Sattanar from 3rd to 5th century. There we have depiction of Dravid Sabhata, details of history, imagination, pathos of lives, depths of life. And then, side by side, there was Niti Katha, Bital Pachisi, Panchatantra, is like fables. There are also the stories of everyday life. There are so many stories of life in Indian literature. Our culture, our sorrows, our joys of everyday life has been written by our great poets, and they also wrote
the kahinis of Raja and Rishis, Kalidasha Bhasa, Bharat Muni, Ashwaghosh. One thing we everybody know, unity in diversity is the Moola Mantra of Indian life. There are so many language and literature here. In this platform, we took the flavor and the odor of varieties which filled our minds, and we are blessed, full of joy, blissfulness. Today, standing in this platform, we feel the extracts and the trends of today's writings. And we are encouraged by new thoughts. Here is so many writers. We are encouraged, we are energetic to see their new thoughts, new writings. These are the values of literature which gave me Ananda. Our heart became blossom, our heart blossoms and bloom. The name of the program is UNMESHA, where blossom and bloom is the main thing of this program. And thank you everyone. I don't take many time because many other persons will say their thoughts and Okay, next. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Very well expressed. Moving to the next participant. The next participant is Mr. A.P. Maheshwari. A.P. Maheshwari ji is an IPS officer of 1984 batch. He culminated his career as chief of the largest armed police force, the CRPF. He has been decorated with President Medal for Distinguished Services, Police Medal for Gallantry, and a dozen other decorations for internal security, operational excellence in difficult areas, and administrative acumen. He also received President Award for Conduct of Elections as head of CRPF and Govind Vallabh Pant Award for his publication. So, very warm welcome, Mr. A.P. Maheshwari ji. Thank you very much. My good morning and greetings to everybody. सभी का बहुत बहुत अभिवादन और आभार. The whole world is very dynamic. The सृष्टि अविरल है. लेकिन सभी घटनाक्रमों से उठकर के जब हम मानवीय भावनाओं की और आंतरिक आभासों से जुड़ते हैं, जिससे कि दिलो दिमाग हमारा झकझोर जाता है, तो साहित्य बनता है. बचपन में हम लोगों ने कहानियां सुनी थी, दादा दादी से, नाना नानी से, राजा रानी की. तो एक बालक के समान हम कल्पना करते थे कि राजा कैसा होगा, रानी कैसी होगी. तो जो कल्पना शक्ति है, द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, अब सोचते थे कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा. तो वो सपने देखने की जो प्रथा आई, वो साहित्य से आई. और जब उसी साहित्य से विवेक निकलता है. एक छोटी सी कहानी है जो नानी हमारी बताया करती थी कि एक व्यापारी सुबह सुबह बाहर जा रहा होता है कि उसकी चौकीदार बोलता है कि हुजूर आज ना जाएं. मैंने इस रात को ख्वाब देखा जिसमें कि जहाज डूब गया है. तो व्यापारी की पत्नी कहती है कि नहीं, आप रुक जाइए, आज मत जाइए. तो रुक जाता है. 6 घंटे बाद खबर आती है कि जहाज डूब गया है. वो खुश होता है, उसको बहुत मालामाल कर देता है, बहुत तोहफे देता है. लेकिन 2 घंटे बाद उसको नौकरी से भी निकाल देता है. तो उसकी पत्नी पूछती है कि आपने इसको नौकरी से क्यों निकाला? उसने तो बहुत अच्छा काम किया, आपकी जान बचाई. बोली जान बचाई, उसके लिए मैंने उसको उपहार दिया. लेकिन वो रात को सोया, उसने सपना देखा, जबकि उसका काम सोना नहीं था. तो ये विवेक की जो शक्ति है वो भी हमें साहित्य से मिलती है. और भाषा ज्ञान से अभिव्यक्ति की जो शैली है, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, द एम्पैथी विच कम्स फ्रॉम द लिटरेचर. तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे,
तुमने लफ्ज की तासीर को समझा ही नहीं, वरना नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, और हाथ से वैसे तो बहुत हैं शहर में, लेकिन फूल से छपके भी अखबार निकल सकते थे। वाह, वाह, तो क्या बात। दिस पावर ऑफ एक्सप्रेशन विच कम्स टू अस, ये जो अभिव्यक्ति है जो हमारे अंदर के आदमी को झकझोर देती है, ये साहित्य से आती है, घटनाक्रमों से नहीं। घटनाक्रम अपनी जगह है, और ऐसी बाहरी तथ्यों से भावनात्मक मूल तक जब हम पहुंचते हैं, जब हामिद एक लोहे का चिमटा लेकर के पहुंचता है मुंशी प्रेमचंद की कहानी में, दादी उसको कोसती है कि तेरे को यही सूझा, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं और मेले से ये लेके आए हो, तब वो बोलता है कि मैं भले ही भूखा प्यासा रहा, लेकिन जब तुम मेरे लिए रोटी सेकती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है, तो मैं आपके लिए चिमटा लेके आया हूं। तो चिमटा कोई धातु नहीं थी, उसका कोई वजन नहीं था, उसका वजन तब है जबकि वो दादी रोने लगती है और उसको अंग लगा लेती है, और जब वो दोनों के उद्गार उमड़ते हैं सैलाब आंखों में से, तो वो साहित्य बनता है। तो घटनाक्रम से हम जब अंदर के आदमी की तरफ जाते हैं, जब विविधता छुपी होती है। मैं एसपी बांदा था तो मैंने एक रेड की, और वो कहानी में मैंने लिखा भी है, जहां ट्रक वाले रुकते थे और सारी औरतों को पकड़ के हम लोग लेकर के आए, तो मैं उनसे पूछने लगा, तो एक ने कहा कि साहब आपको क्या मतलब है, आप हमें एफआईआर कायम करिए, बंद करिए, आप अपना काम करिए, काहे पूछ रहे कि मैं एक और धंधा करती हूँ। मैंने फिर भी कहा कि नहीं बताओ, तो उसने कहा साहब सुनना है तो सुनिए। फिर बोले साहब किस औरत को पसंद, मैं उसी की भाषा में बोल रहा हूँ, कि साहब किस औरत को पसंद है कि रोज एक नया मर्द उसके ऊपर चढ़े, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि मेरे मर्द के पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे बच्चे भूखे सोखते हैं, और साहब मेरा मर्द भी मेरे साथ क्या करता है, रात को वही करता है जो ट्रक वाला करता है, लेकिन ट्रक वाला 50 रुपए दे जाता है, जिससे कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। तो प्रश्न था उस एसपी के सामने कि वो कानून को लागू करे या परिस्थितियों से विवश महिला। तो उसके अंदर से साहित्य निकला, एक सोच निकला कि साहब क्या किया जाए। कानून, डॉक्टर भी कहता है कि साहब दवा अपनी जगह है, लेकिन मैं दवा किस शरीर में दे रहा हूं, वो शरीर भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो साहित्य हमको ये सोचने को मजबूर करता है, और वही साहित्य उस विवशता से हमें ले जाता है। जब कबीर कहते हैं प्रेम और बंदगी क्या है, कि हमन है इश्क मस्ताना, हमें फिर इंतजारी क्या, हमारा यार है हम में, हमें फिर बेकरारी क्या, कि माई बिलीवर्ड इज विद इन मी, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। सो ये कहाँ से, ये भाव जो अंदर के आदमी को जगाता है, ये आता है। एक आस्था होती है। आर के नारायण ने कहानी लिखी, डॉक्टर्स वर्ड। डॉक्टर को पूरा विश्वास था कि मरीज आज रात को मर जाएगा, वो आखिरी दफा उसको देख के जाता है, लेकिन मरीज फिर भी पूछ लेता है डॉक्टर साहब मैं बच जाऊंगा? डॉक्टर साहब उसका मन रखने को झूठा बोल देते हैं, नहीं नहीं तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे। डॉक्टर सुबह रिपोर्ट देखता है कि मरीज की रिपोर्ट आएगी, लेकिन किसी रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का जिक्र नहीं था। तो वो कौतूहलवश खुद जाते हैं और देखता है डॉक्टर की बच गया है, जिंदा कैसे है। और तब आर के नारायण लिखते हैं कि लेकिन सारी दवा फेल हो गई, लेकिन उसको अपने डॉक्टर पे फेथ था, और जब डॉक्टर ने रात को कह दिया कि नहीं तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे, तो उस आस्था पे वो ठीक हो गया। तो ये जो चीज है वो सामने उजागर होती है साहित्य से। यह साहित्य सभी कालों में जीवंत है। कबीर ने कभी लिखा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया। तो एक शायर लिखते हैं इसी की बात में कि झील में पत्थर न फेंको, झील में पत्थर न फेंको, दायरे बन जाएंगे और दूर तलक उलझनों के सिलसिले खुल जाएंगे। और ऐब अपने दिल के भीतर झांक कर देखो ए दोस्त, बंद कमरे में भी कई आईने मिल जाएंगे। तो अक्रॉस द टाइमलाइंस, उस काल से इस काल तक साहित्य वही भाव लेकर के जाता है, जीवंत रखता है। तो नॉट ओनली the timelines but also the geographies. Robert Frost ने लिखा, woods are dungeon dark and deep and I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. और इसी शहर के शायर हैं बशीर बद्र साहब, इसी शहर के शायर हैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। The same thing has been expressed. तो साहित्य से हमें मालूम पड़ता है कि जो जीवन लोगों ने जिया, जो एक्सपीरियंशियल सेल्फ है, वो एक्सपीरियंस सेल्फ रिमेन्स द सेम अक्रॉस द ज्योग्राफीज, अक्रॉस द टाइमलाइंस, दैट रिमेन्स द सेम। वही शाश्वत सत्य है। तो जब डकैत वाल्मीकि बनता है तो साहित्य उजागर होता है। जब अंगुली मार अहिंसा छोड़ करके अहिंसा का रास्ता अख्तियार करता है तो साहित्य बनता है। और जब गौतम बुद्धा
से उसका शिष्य पूछता है कि हुजूर, आपने इतने बड़े बड़े उपहार और द्रव्य को छोड़ करके ये बुढ़िया के आधे अनार को बड़े चाव से खा रहे हो। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि ये सब जो मुझे भेंट दे गए, ये अपनी संपत्ति का केवल 1% भी नहीं होगा, और ये जो बुढ़िया आई है, इसने सूखा अनार दिया है, इसके पास तो इसके अलावा कुछ था ही नहीं, इसने 100% हमें दे दिया। तो ये जो शाश्वत मूल्य है, इसको कौन जीवित रख रहा है? वही साहित्य चल करके आता है हमारे तक, चाहे वो जापान की कहानियां हो, चाइना की कहानियां हो, सबके मैंने अनुदित वो पढ़े हैं। वो भाव जो अंदर का आदमी है उसको जीवित रखता है, यही हमारा साहित्य। तो हमारी दिशा, हमारी नियत और हर पल में समा करके उसको जीने की जो कला है, जो स्पंदन है, जो उन्माद है, जो ओज है, जो आशा है, ये जितने भाव हैं जो आदमी को जीवित रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं रामानुज की कहानी। सीआरपीएफ का सिपाही था, छत्तीसगढ़ के जंगल में गया, ब्लास्ट में उसके दोनों टांगें चली गई। इतना हताश हो गया कि मैं जिंदगी भर आश्रित हो जाऊंगा। एक तो वो भावना, और जब उसके साथियों ने, उसके जो भी लीडर्स थे उन्होंने और संगठन ने उसकी मदद की, तो उसके कृत्रिम पांव लगे, और वो कृत्रिम पांव जब लगे तो फिर से एक साइबर वॉरियर के रूप में उभर करके आया। तो वो निराशा को बिल्कुल आशा, तो जब उसकी कहानी लिखी गई तो वो एक कहानी साहित्य बन जाती है। एक वो अमर सिंह है जो कि सीमा पे खड़ा है, उसको दिमाग में ख्याल आता है कि मैं चला गया तो मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि नहीं, मैंने प्रण लिया है, देश की रक्षा का प्रण लिया है, और मेरा अपने आप से वादा, अपनी आत्मा से वादा है, और फिर वो अमर हो जाता है। और इसी पे कवि ने लिखा है, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। बड़े बड़े लोग जाते हैं, जिन पे धनवान होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं, केवल वो लोग उन तक पहुंचते हैं जो उनको जानते हैं, जब वो दिवंगत होते हैं। लेकिन एक जवान जब शहीद होता है तो पूरा राष्ट्र अपने पांव पे खड़ा होता है, तिरंगे से उसको सलामी मिलती है। और इसी के लिए फिर कवि ने कहा कि देखो नौजवान जा रहा है, देखो कितनी शान से। तो ये जो आन है, शान है, बान है, आप किसी क्षेत्र में ले लें, ये है आदमी को जिंदा रखती है। चैट जीपीटी पे कल एक सेशन हो रहा था, बहुत सी चीजें उसमें डिस्कस हो रही थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो आदमी के अंदर का आदमी है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कबीर ने लिखा कि बूंद समानी समुद्र में, A drop will get absorbed in the ocean, everybody knows. बूंद समानी समुद्र में, जाने सब ये सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोय। How will the ocean will merge into a single drop? It's only possible within a human being, the deep inside us, in our deep mind, and only as creative as a man can be. मैं इसी के साथ मेरी वाणी को इतिश्री देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर। It was really excellent speech by Mr. Maheshwari, and in his narration he's quoted from Premchand to Kabir, and previous orator, she was reminding us of the stories of Ramayana and Mahabharata. So we can judge that who are our permanent leaders in mythology and in literature also. It was excellent oration. Thank you. So good. Thank you, sir. Moving on to the next speaker. The next speaker is Mr. Vijayananda Singh. He is an eminent essayist, scholar, fiction writer and editor. He has been writing since last 4 decades. He has more than 60 publications to his credit. He had actively associated with editorial board of renowned Odia literary journal Konark and Ashana. After associated with many educational and cultural organizations of government of Odisha for a long period, now he is working as Gopabandhu Das Research Chair Professor in KISS deemed to be University, Bhubaneswar, Odisha. He was Secretary to Odisha Sahitya Academy, convener of Odia Advisory Board of Sahitya Academy, and President of Utkal Sahitya Samaj, Katak, Odisha. So very warm welcome to Shri Vijayananda Singh ji. Thank you, Madam. Honorable President of this session, eminent novelist, Vishwas Patil ji, and co-participants, friends, ladies and gentlemen. Before a discussion about the value of literature, it will be in order to discuss what literature is, because it has some bearing on it.
Literature is a creative writing which expresses and communicated thoughts, feeling, and attitude towards life. It has the quality of Ponan's writers aim at immortality for themselves and for those they write about. Good literature holds the mirror up to nature. It reflects some thought or feeling which can immediately be recognized as being true to life. Another quality one may expect to find in good literature is originally writers have already dealt in one way or another with almost every imaginable human story or situation. But one can see an old story or an idea in some quite new light. So most good literature is a traditional and original at the same time. It must be remembered that the central theme of literature, life, society, love, death, and nature, are unchanging. So most of our ideas about these great subjects, originality consists of not of intending view themes, but of seeing and expressing the old intolerable themes in new light. This is what Alexander Pope meant in the well-known coupled in his poem, Essay on Criticism. Writing literature is not only a matter of ideas and inspiration, but also practice and technique. The art of an artist cannot be mastered without effort and practice. But it should be remembered that the literature can be lived only by creative imagination. Without it all technical skills or unless, yet without same technical knowledge and craftsmanship, no good writing is possible, but it will be foolish to think that good literature is made by technique alone. Another very important feature of good literature is a moral consciousness. Feeling good and evil have a real meaning, a meaning which lies beyond the ideas of right, wrong, that happens to be accepted at the particular time or place. The great writer did not intend to moralize or impose upon us their own ideas of right and wrong, but their works continuously remind us the good and evil are real and we can not be natural towards them. Valmiki, Vyasa, Dante, Milton, Goethe, Shakespeare, Ibsen, and Hardy immediately spring to mind as a writer strongly conscious of the everlasting war and good against evil. Satan and Paradise Lost, Ravan is Raman, Manthara and Kaikeyi in Raman, and also Logo in Othola can only have meaning if we can accept the idea of moral good to which they are opposed. Now we shall come to the value of literature. When one is interested in a country and it is people in its language, there are few better ways of getting to know than through literature. We learn about the permanent aspects of that country through literature. Apart from the characters and social life depicted in literature, we also learn human character and emotions influenced by its natural surroundings. We get such things from the novels of Thomas Hardy in English literature. Literature too can teach us something about the places of some country. That is the case with Wordsworth Lake District. The desire to appear cultured or well-read the another purpose of literature. It became social necessity to know about fashionable writers and their works. Passing an examination in literature in one of these regions for studying literature. This type of studying trains students to read literature between the lines. At present, in a world dominated by television, internet, cell phone, and artificial intelligence, it is easy to lose the habit of thoughtful and careful reading of literature. In spite of presence, reading literature still remains one of the cheapest and easiest form of enjoyment. So, reading literature is not a labor but pleasure. New pleasure and new problems are discovered at each reading.
but studying the literature, we can, in some sense, make ourselves better people. Literature, in fact, is something from which we get moral education. Plato and many great men have subscribed to this view. Sir Philip Sidney in Apology for Poetic Experience, that by reading on the deeds of good and heroic men in literature, we ourselves are led towards goodness and heroism. The great 18th century critical Simon Johnson liked to say that the purpose of literature is to instruct. In fact, the knowledge of life which one may get through his own experience is extremely small, but study is literature. One can use the experience of the other people as well, so that he will become what Bacon calls a full man, tolerant, loving, understanding, compassionate, and perhaps even wise. By reading of Carvens, we learn that it is foolish to mistake dreams of reality. Similarly, by reading Hamlet of Shakespeare, we learn that a failure to make decision at the right moment can be disastrous. In Gita and Bhagavad, it is said, if we pursue the materialism, we will suffer. And if we are after spiritualism, we will be happy. We learn these lessons from these two great books. The value of reading literature is in some way similar to the reading of history and philosophy. It helps us towards better understanding of ourselves and our fellow human beings. Literature will not help the feared and hungry today or to save the human life tomorrow. But by studying good literature, we can learn about the human problems, difficulties, and human errors. This is surely an important step towards international understanding and world peace. So, studying literature is not unless nor a waste of time. Literature has immense value. It does goods to man and society. It unites all people. We learn about the line spirit. It impacts human beings from a work of consciousness. It removes narrowness, hypocrisy, egoism, and bring in ideas of truth, welfare, compassion, and fellow feelings. It also satisfies our sense of beauty. Literature binds the past, the present, and the future. The Ramayana and the Mahabharata, precisely I mentioned, Odiya's Bhagavata, which was written by eminent Santa, Sannyasi, and writer, and trendsetter Jagannath Das, conceived the ideal of literature in India. These epics are the category of moral literature. These three epics have inspired people since their very inception. The book speaks universal truth. Literature brings in moral strength and self-confidence. It guides people in their path. Of course, literature transforms itself according to circumstances, but it always provides joy, peace, and enthusiasm. It is full of hope. Literature is full of hope, desire, dream, and possibility. It gives strength and provides support always. Literature has a value. It lifts the readers to a higher plane. Literature sometimes is the cause of social revolution. Without literature, human life and social life is valueless. Sometimes literature always a person to step back in time and learn about life on earth from the ones who worked before us. Thus, it has a historical value. We will have better understanding of the culture. Literature should be read as it helps one to develop empathy. It also provides linguistic of the time. We have already discussed how to connect all human beings together. Reading, studying, and fully understanding, literature will expand one's mind. But this one can also have a spiritual connection with another. Literature is greatly intertwined with man, his society, and every life. Man will not be same without literature. So thanking you all, and I will be grateful to Sahitya Academy for that occasion and for my giving a participant. Thank you, sir.
Mr. Vijayananda Singh. He looks after the oldest organization, literary organization in our country, that is Utkal Sahitya Samaj. We should congratulate him. He is considered there as a tiger of Utkal in literature. Next one. Thank you, sir. Moving on, our next speaker is Mr. Satish Alekar. Mr. Satish Alekar is a Marathi playwright, director, and actor. He is one of the founder members of the theatre group Theatre Academy Pune. Many of his plays have been translated and produced in several regional languages all over India. He has also authored several short plays that are extensively staged by experimental theatre groups. He is the recipient of Padma Shri, Late Pren V.K. Jog Award, Nandikar Samman, Sangeet Natak Academy Award, and fellowships from Asian Cultural Council. He has written scripts for Marathi feature films and Hindi TV serials. Takishi Samvad is his latest play. So a very warm welcome to Mr. Satish Alekar ji. Over to you, sir. Namaskar. Thanks for inviting me. I am a little odd person amongst the group because I am not directly belong to the tradition of literature, but loosely belong to tradition of literature because I am from theatre and I am a performer. I write my plays, I direct my plays, I act in it sometimes, and I used to administer my theatre group, Theatre Academy, since 1973. And last 50 years, we have been doing plays in Maharashtra, in India, and outside India. And our plays are not in the mainstream. Our plays are not, maybe not popular, barring few like Ghashiram Kotwal. So I will just going to read out a small note which I have prepared, one-page note, and then I will going to cite some examples of the contemporary theatre to support my note. Please forgive me because I am an odd person out. So I will read the note I prepared. Though I am writing my plays for last more than 50 years, that are not always popular, I am convinced that I am the most unqualified person to discuss the topic value of literature in theatre, because I added that counts afterwards, the value of literature in theatre. I am most unqualified to discuss the topic value of literature academically because I have never ever studied the literature formally or informally. I was teaching my subject biochemistry for 26 years in a local medical college while writing, directing, acting the plays and administrating our theatre group, Theatre Academy Pune, which was founded in 1973 by our friends like Jabbar Patel, Mohan Agashe, myself and many others. My group, Theatre Academy Pune, during last 50 odd years, produced Marathi plays like Ghashiram Kotwal, Mahanirvan, Begum Barve, Teen Pashaza Tamasha, Mahapur, and many others. In theatre, as we know, this is very cliche, in theatre we deal not only with the words, but the space in present time before the live audience. And the live audience extracts the meaning while observing the theatre space along with the other elements of theatre. Of course, the words occupy the theatre space predominantly. Another thing is performance of the play is self-lasting, and the audience, not the reader, recalls the memory of the past live performance to discuss the play thereafter and not the written text. Though the written text can be made available in a book form, but it is live performance that the play that matters the most to me as a playwright. With this premise in mind, I shall try to elaborate the present topic a bit. While understanding the value, it is also important to judge the contemporary relevance of the play. The value of a particular play refers to its enduring qualities like theme, character, and message. The message can be socio-political, philosophical, or typical, telling a story in a superficial, entertaining way,
but has to be the integral part of the theme aesthetically, and that should hold a significance over time. While contemporary relevance, on the other hand, relates to how well a play addresses the current socio-political issues that resonates the modern audiences, the value is timeless, and contemporary relevance checks the applicability and significance of the play in the present time. The extent of timeless value makes the play classic, perhaps. For me, as a playwright, that matters the most is how I invade the theatre space through my text and with the ideology that I believe in. I have to find a new method each time to invade the theatre space with no fixed grammar, because grammar, luckily in an art form, is not structured, is very loose. It is very fluid, and it is up to the creator to interpret that kind of grammar. It is not the grammar of languages. Grammar of art like theatre is always a fluid, and there are a lot of scope for interpretation for this fluidity. So I invade the theatre space through my text with the ideology that I believe in, and I have to find a new method each time to invade the theatre space with no fixed grammar while my ideology remains in focus. Habib Tanveer, the great theatre doyen of this very city, and at present his birth centenary is going on. His birth centenary is going on. He used to say that every play is a political play to an extent, and he is very right. Every play is against something. And there has to be a struggle, there has to be a conflict in the play. And it is very true. And it is the innovative method each time you look for the innovation, and that is very challenging and inspiring. So before I end the note, I would like to include 3 different plays to support my document and try to understand the meaning, how I understand the value of literature in theatre. First play I would like to mention is our own play of my group, Gashiram Kotwal. The play which was written by Vijay Tendulkar in 1972. He wrote the 2 plays at the simultaneously. Both plays have become contemporary classics over the last 50 years. They all completed 50 years last year only. And Tendulkar have written 2 plays simultaneously while writing, Gashiram Kotwal and Sakaram Binder. Sakaram Binder was produced commercially by the professional group in Mumbai, while Gashiram Kotwal was produced by our group, amateur group or experimental theatre group, Theatre Academy in Pune, with 40 actors, with the music by Bhaskar Chandavarkar and directed by Jabbar Patel and acted by many like Mohan Agashe and other 40 people. And Tendulkar was dealing with the play Gashiram Kotwal theme, absolute power corrupts all. He never wanted to make the play timeless. He never wanted to worry about whether he is writing a play contemporary relevant or otherwise, or he is giving some new meaning to a small anecdote from Peshwa era about Nana Fadnavis and Gashiram Kotwal. He wanted to make a comment on the rise of Shiv Sena during that time, in 1970s and 72. And that was his outcome of this play. And over the years, you will find the absolute power corrupts all. This play is becoming, by the time, more and more relevant, especially so with the present regime. So that is the one, and the play has become controversial because during that time also it was not liked by the people, because the play is written by Vijay Tendulkar. All actors were were all Brahmins of Pune city. Agashe, Wazhe, Joshi, Pendse, and directed by a Muslim director, Jabbar Patel. It was not taken lightly. So there are a lot of resistance from the right wing, and our parent group, Progressive Democratic Association, decided to ban the play. So we had to break away from our parent group and establish our new group, Theatre Academy, and rest is the history. So that play I would like to recall. Second play which is still running, Gashiram Kotwal is also running in several. We ourselves completed 500 shows.
65 shows were performed outside India professionally. Still it is going on in Bengali, still it is going on in Marathi by other groups. But we, in original production, ran for 20 years. And we closed down the production on 6th of December 1992 in Calcutta, while the Babari Masjid was getting demolished on the same day. We were stuck in Calcutta because of that episode for 3 days, I still remember. And the second play I come across is still running, directed by my friend Vaman Kendre, is Gazab Teri Ada, Gazab Tichi Ada. The play is based on a Greek comedy, Lysistrata, written 411 BC by Aristophanes, and plays about anti-war, Athens and the other city. Satish sir, you have just 1 more minute. Yeah. Sorry. So this is the it is the anti-war play that I would like to. And the third one I would like to mention is the Manipuri play Draupadi, which was done by another friend of ours, which he is no more, Haislam Kanailal. And you know the famous scene there, she refused to wear the clothes. It is a protest against the rape. The play is based on Mahashweta Devi's short story, which was written in 1976. Play was performed in 2000. And after 4 years, there was a protest. There was a killing of one woman in Manipur, and she was gang raped by the military personnel, and she was extrajudiciously killed. And immediately the Manipuri women gather and they stage a naked protest in the bazaar. And one researcher interviewed these women. They say that they are not aware of that play. So some telepathy is going on from about the value of literature, whether they read the play or not read the play. And I will end just with 2 lines. Lastly, theatre is not an individual art. Performance cannot happen without other elements of theatre. Unlike writing a short story or a novel, I remain very humble to my actors who carry my play text over their shoulders into the theatre space with a sharp precision and the method that I decide. My actors are doing tiring exercise for last more than 50 years, and that too for the plays which are not from the mainstream popular genre. I value my plays for them, and I don't care much for what value my plays carry or for their contemporary relevance. Thank you. Thank you, sir. Very nice. In short, he has taken, he told about the great history of Marathi theatre as well outside also. And no doubt the playwright and the play is a inherent part of literature. It is not out of the literature. Thank you, sir. Moving further, our next speaker is Mr. Shiv Narayan. Shiv Narayan ji is a professor at Sri Arvind Mahila College, Patliputra, Vishwavidyalaya, Patna. He has 46 publications to his credit in varied genres, most of which are criticism works and also some collections of poems, short stories and ghazals. He has also been editor of many literary journals, including Chintan, Srijan and Nai Dhara from Patna. He has received Nagarjuna Puraskar, Pandit Narendra Dev Rashtriya Shikhar Samman, Udbhav Shikhar Samman, Ganesh Shankar Vidyarthi Puraskar, among many others. So, very warm welcome to Shiv Narayan ji. नमस्कार। इस सत्र के माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वास पाटिल जी और मेरे सभी सहभागी विद्वत्गण, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकार और मेरे जो प्रिय कवि हैं, मेरे शहर से आते हैं, आदरणीय अरुण कमल जी भी जुड़ गए हैं इस आयोजन से, तो मैं उन्हें भी आदरपूर्वक संबोधित करता हूं, डॉक्टर चितरंजन मिश्र जी और आप सभी। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे जब मुझे ये विषय मिला था, लेकिन बीते 3 दिनों से दुनिया भर के साहित्य को विभिन्न भाषाओं में जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ और जिसे मैं कंसीव कर रहा हूँ, तो वो नोट्स अलग से रखकर मैंने सोचा कि जो बीते 3 दिनों में मैंने यहाँ बातें सुनी हैं विभिन्न भाषाओं में, तो उनको ध्यान में रखकर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ।
और इतना ही कहने के लिए मेरे पास समय भी है। मैं तो शुरू से ही विज्ञान का विद्यार्थी रहा, फिजिक्स का मैं विद्यार्थी रहा। बाद में किसी अंतःप्रेरणा से मैं साहित्य में आ गया, और जब मैं साहित्य में आया तो हमें यही बताया गया कि साहित्य जो है वो जन जन के हित की बातों को सामने लाता है। ये साहित्य का भाव है, और ये दूसरों के जन जन के कल्याण की बात करता है। जब हम इसे कल्याण की बातों को हमने सुना तो इसे लोग शिव से जोड़ते हैं कि ये सत्य है, शिव है, सौंदर्य है इसमें, और अंततः ये हमें काव्यशास्त्र की दुनिया में ले जाती है ये सारी भावनाएं, और हमें बताती है कि साहित्य जो है ये रसो वैसा है। साहित्य क्या तो एक रस के समान है, ये आनंद की अनुभूति कराता है। यहीं से मेरे मन में एक बात आती है कि जिस समाज में शांति हो, जिस देश में शांति हो, वहाँ तो ये बात समझ में आती है कि साहित्य जो है वो आनंद की वस्तु है। लेकिन जो समाज तनाव से गुजर रहा हो, जहाँ भयंकर अशांति हो, क्या वहाँ भी हम आनंद में रस की प्राप्ति की कल्पना कर सकते हैं? फिर मेरे मन में बात आती है कि आचार्यों ने गलत तो नहीं कहा होगा। तो मैं समकालीन साहित्य के संदर्भ में यही समझना चाहता हूँ कि हाँ, ये साहित्य है साहित्य, लेकिन ये सहित नहीं है, ये सही और तो है। तो यानी तथ्य। हम अपने समय में जो यथार्थ देख रहे हैं अपने आसपास, अपने समाज में, अपने देश में, उसकी अभिव्यक्ति अगर हम कौशल पूर्वक करते हैं तो वह भी एक साहित्य है। और जब इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, और चाहे हमने किसी भी भाषा, हम 3 दिनों से अनेक भाषाओं के साहित्य में क्या कुछ चल रहा है उनकी संवेदनाओं से हम परिचित हो रहे हैं, तो अभिव्यक्ति के इस उन्मेष में इतनी बात तो समझ में आती है कि भौतिक सक्रियताएं जहाँ बहुत थकान महसूस कर विश्राम में चली जाती है, तो वहाँ हमारी संवेदनाओं का जो उन्मेष है वह सामने आता है और मनुष्य मन को थोड़ी तरलता देती है। तो ये बातें जब सामने आती है तो मुझे लगता है ये जो हम साहित्य के मूल्य की बात कर रहे हैं, इसे हम 3 चीज़ों में समाहित करके दुनिया की किसी भाषा का साहित्य हो उसे हम समझ सकते हैं। और उनमें है सबसे पहला करुणा। ये जो करुणा है, एक की वेदना को दूसरे के द्वारा महसूस किया जाना, ये जो संवेदना है, यह संवेदना हमें उस पीड़ित पक्ष से साहित्य के अंतिम पैदान पर जो लोग, जीवन के अंतिम पैदान पर जो लोग हैं, हाशिए में जो लोग हैं, या विभिन्न अंतर विरोधों के द्वंद्वों में फंसे लोगों की जो पीड़ाएं हैं, उनको जी रहे जो लोग होते हैं, तो उनकी वेदना को अगर हम महसूस करते हैं तो हम में एक भाव आता है कि जो पीड़ित पक्ष है हम उसे न्याय दिलवाएं। तो ये जो न्याय है, सबसे पहले करुणा यानी संवेदना, और दूसरा है न्याय, कि उस पीड़ित पक्ष को हम न्याय दिलवाएं। इस न्याय दिलवाने की अभिप्सा से हम सक्रिय होते हैं, तो हम कैसे उसे न्याय दिलवाएंगे? हम तलवार तो नहीं उठा सकते हैं, ये काम तो हमारे माहेश्वर जी का है। ये आईपीएस बहुत बड़े ऑफिसर रहे, इन्होंने उस मोर्चे पर भी काम किया। ये अच्छी बात है कि ये संवेदनाओं को भी जीते रहे। हम तलवार तो उठा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में, और जो शोषक पक्ष है उसके प्रतिरोध में अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम अपना लेखन दर्ज करते हैं। तो ये पहली बात है संवेदना यानी करुणा। दूसरा है न्याय, जो पीड़ित पक्ष है उसे हम न्याय दिलवाएंगे। और तीसरा और अंतिम है कि एक प्रतिरोध हम दर्ज करेंगे, वो हर उत्पीड़क के प्रति जो उत्पीड़न समाज में कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो, सत्ता हो। इसी मानी में हम कहते हैं कि जो हमारे लेखक हैं, जो संवेदनाओं के माध्यम से पूरे समाज के दर्द को सामने ला रहे हैं, उन्हें सत्ता के प्रतिरोध में हमेशा खड़े रहना होता है। और जो शोषक समाज है, चाहे वो हाशिए का समाज हो या मुख्य धारा में भी बहुत सारा हमारा समाज है जो उत्पीड़न सहने को अभिशक्त है, उन सबके प्रति हम एक प्रतिरोध दर्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो मूल्य है, मूल्य जो है, यही से हम अर्जित करके, यानी
अलग से कोई एक हम फिक्स मूल्य तो तय कर नहीं सकते हैं कि साहित्य के लिए यह मूल्य होगा, इस भाषा के साहित्य के लिए यह मूल्य होगा। तो समेकित रूप में मुझे लगता है कि ये जो 3 तत्वों की चर्चा मैंने की, मैं ये भी जानता हूँ, ये कहते हुए, इन 3 मूल्यों की चर्चा करते हुए मैं जानता हूँ कि तात्विकियों से कोई भी साहित्य लिखा तो जा सकता है, पर तात्विकियों से कोई साहित्य बड़ा नहीं होता है। साहित्य बड़ा होता है अपने समय के अंतर्द्वंद से। जो कन्फ्लिक्शन समाज में है, जो अंतर्द्वंद समाज में है, उन्हीं द्वंद्वों से कोई साहित्य बड़ा होता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, जैसे कि अनिंदिता जी ने कहा अपने वक्तव्य में, शुरू में ही इन्होंने कहा कि जो महाभारत है, वह महाभारत केवल एक सांस्कृतिक मूल्यों का उत्कर्ष ही नहीं है, वह भारत का इतिहास भी है। मैं ये कहने का दुस्साहस तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उसमें इतने सारे द्वंद्व भरे पड़े हैं, वो महाभारत हो, रामायण हो, कि भारतीय ही नहीं वैश्विक समाज के बहुत सारे अंतर्विरोधों को वो अभिव्यक्त करती है। और इसीलिए हमें उसमें अपना अतीत, हमें अपना इतिहास भी दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, मेरे पास मैं समझता हूँ इतना ही समय, मैं अपना समय ले चुका हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं साहित्य अकेडमी के प्रति बहुत बहुत आभार निवेदित करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े उत्सव का एक हिस्सा बनने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your very good narration in fine words. Thank you, sir. Our next speaker is Mr. Sandeep Bhutoria. Sandeep Bhutoria ji is a writer and social and cultural activist. He has published books on travel, wildlife, and philanthropy. He is the managing trustee of Prabha Khaitan Foundation. He is also the Honorary Secretary General of the Bengal, a Kolkata-based NGO. He is a Fellow of the Royal Society of Arts, London. He has been nominated by the Ministry of Culture, Government of India as a member of the Board of Trustees of Indian Museum, Kolkata, and Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Civil Aviation. A very warm welcome to Sandeep ji. Thank you. Respected Chair, my fellow intellectual colleagues, श्रद्धेय अरुण कमल जी की उपस्थिति को प्रणाम। Mike. हाँ. Am I audible? Thank you. Thank you. Hello. Hello. चाहे तो एडिशनल माइक दे दीजिए उधर. हाँ. हेलो. कॉर्डलेस दे दीजिए. हाँ, चलिए शुरू करिए. मेरी जोर से बोल रही हूँ. हाँ. हेलो. ऑडिबल? या आ रही है आवाज. बोलिए. निजे निजे संधान करो ओ विचार करे सत्यकार आनंदो. In exploring and discovering by yourself lies the real joy. My Karm Bhumi is learned from Tagore. Before me, Anita Di has mentioned the Gurudev Tagore's philosophy about literature. And with these lines I start the value of literature. And what else we can all perceive here, where 103 languages can be celebrated in the city. Therein lies the true value of literature as described in such simple yet profound terms by Gurudev Tagore. After all, literature is all about exploring and discovering the past, the present, and the future, the self and the other, the world within the one beyond. आखिरकार साहित्य तलाश और अन्वेषण ही तो है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का, स्वयं और अन्य का, अपने अंदर की दुनिया का और अपने बाहर की दुनिया का. A work of literature, the value of literature, valuable in so many ways. In fact, in every spectrum of life, in every era of our life, in every surroundings of our life, an individual can think of, a society can think of, our country can value of. And let me list few of things, and let me assure you I will finish within 8 to 10 minutes. Literature has entertainment value.
इट्स अ ग्रेट वे टू पास द टाइम। मनोरंजन के लिए साहित्य समय बिताने का एक बेहतरीन माध्यम है। नाउ इफ यू थिंक ऑफ अ डाइवर्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल वैल्यू, it can change the way we live with the influence each other by study the word literature. यह हमारे रहने तौर तरीके में बदलाव ला सकता है और एक दूसरे के साथ को प्रभावित करने में सामर्थ्य भी है। If we think of the artistic value of literature, it helps us contemplate the nature of beauty and human creativity. हमारे सौंदर्य बोध, प्रकृति और मानवीय रचनात्मकता को विकसित करने और उसमें एक नई सोच विकसित करने में साहित्य हमारी मदद करता है। इफ यू टॉक अबाउट द कल्चरल वैल्यू ऑफ लिटरेचर, ये लेखक की रचना धर्मिता और उनकी कृतियों को स्थान और समय के साथ उजागर करता है। इट शेड्स लाइट्स ऑन द प्लेस एंड टाइम ऑफ द ऑथर एंड हिज वर्क ऑन द कॉन्टेम्परेरी वैल्यू एज वेल एज द हिस्टोरिकल वैल्यू एज वेल। हमें अतीत में झांकने और वर्तमान को समझने और भविष्य को बुनने में साहित्य हमारी मदद करता है। दार्शनिक बोध, फिलोसफिकल वैल्यू ऑफ लिटरेचर, इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन नॉलेज, हाउ वी नो एंड व्हाट वी नो, मानवीय ज्ञान की पड़ताल और हम कैसे जानते हैं और क्या जानते हैं और किसे जानते हैं। जहाँ तक मॉरल और एथिक वैल्यू की बात है, नैतिक और मूल्य बोध, यह हमें जीने का सबक सिखाता है और हमें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हमें अच्छे और बुरे का बोध कराता है ताकि हम इससे संबंधित प्रश्न पूछने में सामर्थ्यवान हो सकें। इट हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू गुड एंड एविल बोथ। एंड अबव ऑल, लिटरेचर कैन टच अवर इनर मोस्ट बीइंग द मोस्ट। As described so passionately and evocatedly by W.B. Yeats while he is giving his introduction to Tagore's Gitanjali, I have carried the manuscript of, let me quote him, I have carried the manuscript of those translations about with me for days, reading in the railway trains or on the tops of omnibuses and its restaurants, and I have often had no closet, lest some stranger would see how much it moved me. क्या कभी किसी महान साहित्यकार ने दूसरे साहित्यकार को इससे अधिक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी होगी? जीवन को समझने की साहित्य की अपनी बड़ी भूमिका है। स्वयं अच्छे साहित्यिक कार्यों से रूबरू होना किसी को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के समान है। यदि आप अच्छे साहित्य के संपर्क में नहीं आते तो उसका तात्पर्य है कि स्वयं को विकसित होने का अवसर भी आप अपने आप से वंचित करते हैं। महान साहित्यिक और काव्यात्मक कृतियों को पढ़ने से ही व्यक्ति जीवन को समझ सकता है। अच्छा साहित्य ही व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से देखने में सहायक होता है। सही मायनों में साहित्य अपने विभिन्न रूपों में जीवन जीने के प्रति नजरिए को बदल सकता है। महान लोगों की जीवनियाँ, उनकी आत्मकथा, साहसिक कहानियाँ, हमारी ऐतिहासिक कहानियाँ, हमारी पौराणिक कथाएं, बलिदान और अच्छे मूल्य की वास्तविक जीवन की कहानियाँ हमेशा से प्रेरणादायक रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिली है। साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समय के पीछे जाकर उस समय के कालखंड को जी सकते हैं। साथ ही हमसे पहले पृथ्वी में जो आए थे उनकी बातों को सीखने जाने का अवसर भी साहित्य ही हमें देता है। हम संस्कृति को बेहतर समझ पा सकते हैं और इसकी सराहना भी कर सकते हैं। साहित्य का जो एक विराट स्वरूप है, गद्य, कविता, नाटक, निबंध, कथा, दर्शन, कला, इतिहास, धर्म, संस्कृति पर आधारित साहित्यिक कृतियां और उसके साथ विज्ञान और कानूनी लेखन की साहित्य के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ उन्मेष में बैठे हुए सभी व्यक्ति हैं। पुराने समय की रचनात्मक कथाकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता भी साहित्य के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। लॉजिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, गणित जैसे बेहद कुछ तकनीकी लेखन भी साहित्य का हिस्सा अब माना जा सकता है। कुछ महान साहित्यिक कृतियां जैसे बाइबल और भारतीय महाकाव्य, जिसकी चर्चा यहाँ हुई, रामायण और महाभारत आदि समाज को जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती हैं। विवेकानंद और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने शेक्सपियर के सोनेट, टैगोर, निराला
और कविताएं अधिकांश रचनाएं कालजयी हैं और हर काल में प्रासंगिक हैं। कुछ साहित्यिक और काव्य रचनाएं जीवन का मर्म बताती हैं, सीख देती हैं, वहीं कई रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पाठकों के मन पर जिन रचनाओं का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव लोक जनजीवन पर विश्व के हर कोने में नजर आता है। Literature helps us to deal us with our life better. And I personally feel, which I often say, post-COVID, the things which we go through, I think literature and art is the only way which cannot help in the vaccine. Vaccine is a medical treatment for all our viruses, but the mental condition which we have all passed through post-COVID thing, I think literature, art, culture is the only way which can give us solace for these things. Literature motivates also our critical thinkings. As far as the literature festival is concerned, which has the boom which started in last 5 years, and we say about more than 200 literature festivals registered in this country, उनकी क्या प्रासंगिकता और महत्व है? साहित्यिक महोत्सवों की प्रासंगिकता और उनके महत्व की सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू जो बन चुका है, लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों को एक साथ आने और साहित्यिक कार्यों के साथ साथ हमारे समाज पर इसके प्रभाव में सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा, उन्मेष में आकर और साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य पर एकाग्र ध्यान केंद्रित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पर अफसोस की बात है कि हाल के दिनों में कई साहित्यिक उत्सवों में देश भर में जो व्यवसायीकरण के कारण साहित्य मूल उद्देश्य से हट गया है और सारा ध्यान सेलिब्रिटी उपस्थिति और विज्ञापनों के द्वारा प्रसारित सेशनों पर केंद्रित हो गया है। इसके सही साहित्य उत्सवों को, जो इस तरह के साहित्यिक उत्सव हैं जहां अपनी भाषा, अपने लोग, जो हमारे फाउंडेशन का भी मूल मंत्र है, उस पर जो ध्यान केंद्रित हो रहा है, इसमें सभी साहित्यकारों को इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों को या इस तरह के साहित्यिक मंचों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रत्येक लेखक और विद्वानों को वास्तविक मूल्य को पहचानने के लिए, चाहे मैं अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में कम ज्ञात क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक हों, या चाहे इस समारोह में वैसे लेखक भी जो आमंत्रित किए गए हैं जिनकी लिपि भी, जो मुझे बताया गया कि अभी तक प्रकाशित नहीं है, लेकिन बोली के लेखक इसमें आमंत्रित किए गए हैं। साहित्यिक उत्सवों की बागडोर उन हाथों में सौंपी जानी चाहिए जो वास्तव में साहित्य से प्यार करते हों, ठीक वैसे ही जैसे उन्मेष में हुआ है। दुनिया की निगाहें हम पर हैं। G20 सामने सितंबर माह में हम इस देश में मेजबानी कर रहे हैं। उन्मेष जैसे साहित्यिक उत्सव हमारे सांस्कृतिक और वास्तव में सभ्यगत पहिए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हमें सीमित पर पता लगाने को अनंत को अपनाने में मदद करने के लिए, जैसा कि टैगोर ने संक्षेप में कहा था, सीमा आछे कथा जेमो निश्चित, असीम आछे कथा तेमोनी सत्यो। अर्थात सीमा को होना जैसे निश्चित है, वैसे ही असीम का होना भी एक सत्य है। इस सार्थक पहल के लिए सभी को आभार। मुझे सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी। Dear friends, as I recall the literary masters and their great work, I feel it is a beacon, a spiritual guide for my and everybody's whole life. During my college days, I went through an Urdu short story, Lajwanti, written by Dr. Rajendra Singh Bedi. It is about the partition days, wherein there is a weekly bazaar on the border of India and Pakistan, where the lost goods from both the nations are interchanged. And those lost goods are unfortunate, roofless girls and women. The sharp cattle touts from both the nations are sharp enough to offer a young girl in lieu of another young damsel from the next country. लड़की के बदली लड़की और बुड्ढी के बदली बुड्ढी. The compassionate and heart-rending words of Dr. Bedi sent a cold shiver in my whole blood, and still it gets reverberate in me. In Othello, Shakespeare created a storm of suspicion on the bed of Desdemona and taught the world
how the storm of anybody's bed becomes more wild and dangerous than tycoon on the high sea. Also, we notice the mouth-watering greed of Shylocks everywhere, in every market and every bazaar on this universe. We are all aware with the ailing and shouting of drunkard father and son in Premchand's Kafan, where they collect chanda in the name of Kafan, but in reality for their booze, sharab. But our friends, when I read one Marathi prominent Dalit writer's story, The Gold from Graveyard, Smashanatla Sona, written by our great Annabhau Sate, I got flabbergasted. In metropolitan city like Mumbai, a jobless youth like Bhima finds an unimaginable profession in a graveyard. He realizes that in some communities they put gold in the jaw of the dead body, and here he gets enlightened about an unheard of job for his bread and butter. Later, as night falls, he searches ashes of dead and even dug the soil for freshly buried dead bodies and pluck out the gold from their mouth. Here, he battles with the pack of wolves, that is Bhediyas, a dangerous battle fought between a starved man and heinous animals in the dead night. In my novel, The Dirge for the Damned, Zhada Jadti, I found a father of a needy bride, a project-affected father who runs after a tiger and fights it for getting the skin of that tiger. He wished he was in need of money for the dowry payment of his girl. When Srikant of Sharat Chandra wanders along Indranath, nearby flooded river, they notice many dead bodies coming down with the current of the river. As they catch the body of a little child, Srikant recognizes the Dudh Moha child, suckling child, and the smell of mother's milk on his lips. Here not Sharat Chandra, but a Preshit, a Farishta, gets closer to humanity and judges the tragedy of unfortunate ones. What do we get from all these great authors, from Shakespeare to Sharat Chandra, from Homer to Dostoevsky? We are getting the distilled wisdom of different lands and cultures. It helps to shape our personalities and broaden our sensibilities. Every great piece of literature raises the flag of humanity. It takes us across the entire range of human situation: love and hate, greed, joy and sorrow, faith and its betrayal, ecstasy and agony. It chases a man right across the grave to heaven. Friends, great literature takes us on the holy path, finally, on the holy path of Satyam, Shivam and Sundaram. It gives solace. We cannot measure its value. Art and literature are like northern star, Dhruva Tara. Thank you very much for this session. Thank you, Abhinandani Bandyopadhyay. Anudita Bandyopadhyay, then A.P. Maheshwari for his excellent speech, our Bijananda Singh, then great dramatist Satish Alekar, Shiv Narayan Singh, and Sudeep Bhutoria. It was a fine session, very good words, and everything was in the betterment of humanity and the literature. Thank you very much. Thank you so much. All the participants, please get together for a group photo here. The next session will be at 12 noon. Valedictory session will be at 6 p.m.